the lesson of the introduction of sound, and we are discussing that how you can teach this sound through the Jolly Phonics program. It is very important to know that course is only for young children age 2 to 4. It's not for above 4, because at the level when they are 4 years of age, we have to introduce writing, dictations and blending practice. So there is no blending in these lessons. We introduce the sound through the environment, then we discuss the letter shape of the new sound, story and action, letter formation, sounding, and finally with the poems and songs of Jolly Phonics program. Teachers can make vocabulary basket at home, and they can also bring to school, and they can also collect the things from the classroom, real life objects, and even parents can make the vocabulary baskets at home. You can use simple objects, mirror, mug, matchsticks, map and medicines for the making of vocabulary basket. You can discuss the letter shape with the sound mm, mm, meal, mm, mm, mm. Okay, so this is the time for the story. With the story page, you can have your own stories, you can have your own characters. Like we have made the story with Maria. Maria makes meal with mummy. So here we have got meal, milk, mug, sound, mouse over here. So this is the sound of the day. Meal. Mm. 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 Repetition is required for this purpose. Magnet, mug, mouse. This is the time for the action. Do the action, say the sound, rub your tummy and say Meal. Mm. 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 लेटर फॉर्मेशन. यहाँ पर एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप डॉट से शुरू करते हैं और नीचे आते हैं, तो समटाइम बच्चे उसको दोबारा ऊपर टर्न ले जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस करते हैं. सो यू कैन हैव दिस एक्टिविटी ऑफ मूविंग डाउन एंड अप, डाउन अप डाउन, अप डाउन. इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाने से बहुत ज़्यादा बच्चों की एक हिचकिचाहट दूर होती है और वो उसको एक फ़न एक्टिविटी समझते हैं. You can put your finger on the tracing dot and match letters with pictures. Letter with mat and monkey. So here we have got sounding activity. Where is the sound? Sound can come in the beginning, middle and end. देखा गया है कि ये जो एक्टिविटी है ये अक्सर औकात ओवरलुक हो जाती है और टीचर्स इसको इतना अहम नहीं समझते. वो समझते हैं कि अगर आपने एक्शन करवा दिया, स्टोरी करवा दी, सॉन्ग हो गया, तो लेटर का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो जाता है. लेकिन साउंडिंग एक्टिविटीज़ जो है उनकी फर्दर जो ब्लेंडिंग और डिक्टेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. You can discuss margarine, mat, marshmallow. And you can also discuss that in marshmallow, sound is coming twice, once in the beginning and once in the middle. What are the objects in the nature? You can discuss different shapes of the moon, meteorites, and you can talk about them. Story time. स्टोरी टाइम में हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसी पॉपुलर स्टोरीज़ जो इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल हों वो आपसे डिस्कस की जाए, ताकि उनकी वीडियोस भी आप देख सकें, बच्चों को सुना सकें. बेसिकली बच्चे ख़ुद से स्टोरी नहीं पढ़ते, बल्कि उनको ये स्टोरीज सुनाई जाती हैं. वो इन स्टोरीज़ को सुनते हैं, उनको साउंड से रिलेट करते हैं और उसके बाद उनके कैरेक्टर्स को एंजॉय करते हैं, कैरेक्टर्स की तरह रोल प्ले करते हैं. और इस तरह उनका जो एक नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है. बहुत सारे लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन उनके माइंड में रह जाते हैं. मून रैबिट एंड राइस केक स्टोरी, इट्स अ फेमस वन. यू कैन लुक फॉर इट ऑन द वेब एंड डाउनलोड एज वेल. एक्टिविटी टाइम. So this is the months game where you can look for the month,
month, which month is this, and color that picture. Map, treasure map, they can make their own treasure maps and design the games for this purpose. Worksheet time, in the worksheet time you can tell them through color in the picture, circle sound, and then trace in the shapes over here. Basically is the second last sound of the group 2. I spy with my little eye things at home. Mirror, medicine, magazine, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड मील. समटाइम जो है ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको घर में अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं, और आप बच्चों से कह सकते हैं कि वो इनको ढूंढ कर लाएं, इनको देखें, इनको टच करें, फील करें, और इस तरह से वो इस चीज़ को बहुत इन्जॉय करते हैं. इट्स अ फेमस गेम. व्हेन दे प्ले दिस गेम दे डेवलप लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी, और ये वोकैबुलरी बाद में उनकी क्रिएटिव राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उन्हें, जिससे वो राइटिंग करते हैं उनके माइंड में वो वोकैबुलरी आ जाती है. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी कोई साउंड इंट्रोड्यूस करवाएं तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि उनका जो नॉलेज है वो एक्सपैंड हो जाए. आप इस गेम को थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं एज़ पर योर नीड, एज़ पर योर कॉन्टेक्स्ट, एज़ पर द सिचुएशन, और इस एज में ये ओरली प्ले की जाती है. नेम मारिया, मूसा, सिंग मैग्नेट, मैप, प्लेस माली, मरी, बर्ड एनिमल, मेयर, मंकी, मेलन. यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई स्टूडेंट जो है वो इंडिया के अंदर है, कोई श्रीलंका में है, कोई सिंगापुर में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो उसके लिहाज से बच्चे हो सकते हैं आपको डिफरेंट प्लेसेस के नाम बताएं, प्ले प्लेसेस के, पार्क से जहाँ पे वो जाते हैं, और इट्स इंटायरली इट्स ओके, इट्स एक्सेप्टेबल, इट्स एन्जॉयबल एज वेल. ओके, हेयर इज़ दिस फ्रेज टंग ट्विस्टर. इस तरह के टंग ट्विस्टर्स बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं. Maria and Musa met mechanic with milk and mangoes. What else? So you can see this is the mechanic role play. This is paper plate making of moon, Maisie mouse watch, Meg Mog read storybook, feed the monkey, moth inspection with magnifying glass. This is the monkey mouse. This vocabulary is not for the reading, it's not for the writing as well. This is only for the identification of sound, and also it's very important to know that where is the sound. We can circle them, identify the shape of the picture, of shape of the letter. यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं जो बच्चे पहले से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, आइडेंटिफाई उन्हें भी कर सकते हैं. जैसे ह साउंड है, साउंड है, ए साउंड है, बट नो ब्लेंडिंग एट दिस लेवल. Okay, this is the time for songs and poems. You can introduce lots of sounds with this methodology and they would improve their expressions readily. And the poems are also a good idea because they help them understand and expand their vocabulary. बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो इस चीज़ को बार बार रिपीट करें और बहुत देर तक जो है डिस्कस करते रहें, या जिस वक्त वो प्ले कर रहे हैं उनको जो है वो रिपीट करें, रिवाइज करते रहते हैं. Okay, so finally we end the session with talking about tasting mango ice cream with marshmallows, and children love these snacks, they enjoy them and they love to have everything.